मेथड ऑफ द एपिडेमियोलॉजी विद द डिटेल्स ऑन द एनालिटिकल स्टडी. टाइटल्स क्या, प्रिंसिपल जो 10 मार्क्स में आता है ना, प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ द एपिडेमियोलॉजी विद द फोकस ऑन द एनालिटिकल स्टडी. डेफिनेशन ऑफ द एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और द इवेंट्स इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स. प्रिंसिपल्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, तो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द पैटर्न ऑफ द हेल्थ इवेंट्स, पर्सन, प्लेस एंड टाइम. डिटर्मिनेंट्स में क्या है, आइडेंटिफाइज द कोज एंड द रिस्क फैक्टर. पॉपुलेशन फोकस कंसर्न विद द ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल. कंपेरेटिव मेथड में यूजेस कंपेरिजन्स टू आइडेंटिफाई एसोसिएशन. प्रिवेंटिव ओरिएंटेड एम्स एट द डिजीज control and the prevention. Scientific methodology relies on the observation, hypothesis, testing and conclusion. Method of the epidemiology क्या होता है कि epidemiological methods are the broadly divided into descriptive epidemiology describes disease occurrence by the time, place and person, help generates hypothesis. Analytical epidemiology क्या होता है, test hypothesis to determine causes and risk factor, explain why and how a disease occur. यूजेस कंपेरिजन ग्रुप्स. एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, स्टडीज, इंटरवेंशंस, क्लिनिकल ट्रायल्स, मेजर्स इफेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक एक्सपोजर ऑफ द ट्रीटमेंट. एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, इन डिटेल्स. डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या है, इट इन्वेस्टिगेट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द डिजीज बाय द टेस्टिंग हाइपोथेसिस जनरेटेड थ्रू द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज. इट आइडेंटिफाइज द एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड द आउटकम्स. टाइप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ द एनालिटिकल स्टडी, तो केस कंट्रोल स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोला है, कंपेयर केसेस विद द डिजीज टू कंट्रोल द विदाउट डिजीज़, है ना. और मेजर्स क्या होता है, ओड रेशियो देखने को मिलेगा. एडवांटेज है क्या, क्विक है, इनएक्सपेंसिव है, गुड फॉर द रेयर डिजीजेज. डिसएडवांटेज क्या है, रिकॉल बाइज एंड सिलेक्शन बाइज. एंड कोहर्ट स्टडी क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है. प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव फॉलोज एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप्स ओवर टाइम. मेजर्स क्या है, रिलेटिव रिस्क होता है. एडवांटेज क्या, एस्टैब्लिशेस टेम्पोरल रिलेशनशिप, मल्टीपल आउटकम्स. एंड डिसएडवांटेज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव होता है. क्रॉस सेक्शनल स्टडी समटाइम्स इंक्लूडेड, असेसेस द एक्सपोजर एंड आउटकम एट अ सिंगल पॉइंट एंड यूज्ड फॉर द मेजरिंग prevalences. Importance of the analytical studies: establish causation, Hill's criteria of the causality and help in the risk assessment and the public health planning. Provide evidence for the preventive and the control measures. Conclusion क्या, epidemiology is the central to public health analytical study from the backbone of the causation research and are essential for the informed decision making in a disease prevention and the control.